Hello and welcome to the chapter number 6, that is object-oriented concept. In this chapter, we will learn about how object-oriented concepts are useful for any software applications. So let's start with that. Now, object-oriented concept will totally change how we analyze, how we design and how we implement any real-time software applications. Now, जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप UPS concept से डेवलप करते हो, so that software will be the more reliable software. Now it will be easier to maintain. We can reuse the same code at the multiple places and it enhance the capabilities of our project. Now जो OPS concepts है, that development has started into the early 1960s and from 1980s that are used for the all kind of software, all kind of complex and simple software management. Now the all programming language which are available in market, that is C++, Java, C#, VB.NET, ASP.NET and PHP, right? All are based on the object-oriented concepts only. Now, before object-oriented concepts, जो भी software design होते थे, that follow the procedure-oriented programming, right? So we have the two options available for any software application design. फर्स्ट आइदर आप जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड से डेवलप कर सकते हो या सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू. अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप पीओपी दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिजाइन करते हो तो दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन फंक्शंस. दैट मीन्स आपका जो भी एंटिटी है वो क्या ऑपरेशन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, राइट, तो इन दैट द मेन एंटिटी इज द स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट कौन कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट, दैट मीन्स स्टूडेंट विल टेक द एडमिशन, स्टूडेंट विल गिव द एग्जाम, स्टूडेंट विल गेट द रिजल्ट. तो जो ऑपरेशन कर रहा है उस पे हमारा मेन फोकस रहेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिजाइन द सॉफ्टवेयर. नाउ इन UPS अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो द मेन थिंग इज अ स्टूडेंट, right? What operation वो कर रहा है that is doesn't matter at all, right? So we have the two approach available, procedure oriented and object oriented, right? But अगर आप object oriented concept implement करते हो then we can modular our code. That means आप अपने whole software को small part में develop कर सकते हो so that उसको manage करना बहुत easy हो जाता है. We have reusability, then we can extend code, we can enhance the flexibility और हमारी development speed भी ज्यादा रहेगी compared to procedure oriented. Now object oriented concepts का जो main concept होता है that is the object itself, right? That is a fundamental concept of the any UPS. Other concept also we have that we will study, that is abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance, right? Now हर एक concept now we will study into the detail. The first one is the object. Now what is the object is? So object is simply means that any entity that is exist into the real world that term as an object. That means I myself is an object, right? Object are of two types. First one, it can be concrete object. Concrete object मतलब person, car that are easy to access और जिसको हम touch कर सकते हैं. Second is the abstract object, that is date, time, that is not tangible, जिसको हम touch नहीं कर सकते, that is a concrete object. अभी हर एक object के पास क्या होती है? It has a unique identity. That means if I am a one object, तो मेरा कोई unique name होगा, right? I have the some age, gender which are different for all the other person, right? So that is every object has some unique identity जिससे other object को हम differentiate कर पाएंगे. Now every object have this is properties और उसको हम attribute भी कह सकते हैं. जैसे मैंने बोला name है, city है, gender है, उसको हम क्या बोलेंगे? Attributes बोलेंगे. Now उस attribute के क्या होगी? कोई value होगी. For example, I have one attribute name. So my name is Kruti. So this is called the state. The state is what? That is the value of that attribute, right? Next object what have? It has the methods. Now what is the meaning of method is? So method is its behavior. That means what are the operation, what are the different work he is doing is known as the its method.
right? So every object has this terminology. It has some unique identity, it has some state, and it has some behavior as well, right? And this attribute and behavior combinedly in programming also known as a data member or features, right? So that is what object is. Now next terminology is the class. Now I am also person, you are also person, right? So we have the common attribute. I am also have name, you are also have name, I also have age, you also have age, right? So we have some common attribute, but the value of that attribute is differ from every person. So we can declare all the common attributes into the one separate entity that is known as a class. So what is a class is exactly, it's a blueprint or template for creating object, right? तो class जो भी हम declare करेंगे उसके अंदर हम सारे common attribute list out कर देंगे, right? For example, name, city, gender, birthday, profession, ये attributes सभी person के पास होंगे, but हर एक person के पास क्या होगा, उसकी value different होगी, right? So this all are object that we created from this class, right? So class describe the group of objects that have the same attribute but different values, right? So that is known as the class. Next, understand class diagram. Now what is a class diagram is? So let's understand कि you are developing one big project, right? आप कोई complex university के लिए projects develop कर रहे हो. Now in that you have too many classes available, right? And too many classes are related with the different classes as well. तो आपको क्या करना है, right? तो आपको उसको विजुअली क्लियर करना है कि आप जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उसके अंदर कितने क्लासेस अवेलेबल है, कौन से क्लास के कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन से बिहेवियर दैट इज मेथड है, कौन सा क्लास दूसरे कौन से क्लास के साथ रिलेटेड है, राइट? उसको जो हम डायग्रामिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज नोन एज द क्लास डायग्राम, राइट? उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज होती है दैट इज नोन एज द यूएमएल, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, राइट? इट प्रोवाइड अ डिफरेंट सिंबल, यूजिंग दैट वी कैन ड्रॉ द डिफरेंट डायग्राम, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशंस बहुत इजी हो जाती है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम? सो इट गिव द स्टैटिक व्यू ऑफ द एप्लीकेशंस, हमारे पूरे एप्लीकेशंस का स्टैटिक व्यू हमें प्रोवाइड कर देगी. नाउ यूजिंग class diagram, how can we draw the class? That is what is the structure of the class. तो class जो भी आप करोगे that represent with a rectangle symbol, right? उसके टॉप के अंदर आपको क्लास का नेम डिक्लेयर करना है कि व्हाट दिस क्लास नेम. द सेकेंड सेक्शन इज द एट्रीब्यूट, कि उस क्लास के कौन कौन से एट्रीब्यूट है. एंड द थर्ड सेक्शन इज द मेथड, दैट इज उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है. आई विल शो यू द एग्जांपल. सो दिस इज फर्स्ट सेक्शन इज द क्लास नेम, second is the attribute, and the third section is the method, right? So person is a class, it has the attribute name, city, gender and profession, right? Attribute declare करने की एक separate syntax होती है that we will study. And this is the method, right? He can set birthday, he can change his city, and he can display all this detail, right? So this is how we can draw the class diagram. नाउ इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट और मेथड डिक्लेयर होते हैं उसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दैट. सो फर्स्ट वी विल स्टडी हाउ कैन वी डिक्लेयर द एट्रीब्यूट. तो उसके अंदर फर्स्ट आपको डिफाइन करना होता है विजिबिलिटी सेक्शन. विजिबिलिटी मतलब वो आपका एट्रीब्यूट कौन से पार्ट में विजिबल हो सकता है, राइट? वी हैव द 3 विजिबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल. फर्स्ट होता है प्राइवेट. प्राइवेट मतलब कोई भी आउटसाइडर उसको एक्सेस नहीं कर सकता. सेकेंड होता है प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड मतलब उसका जो भी चाइल्ड क्लास होगा जो उसके रिलेटेड है वो उसको एक्सेस कर सकता है. पब्लिक मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. एंड पैकेज मतलब जिस फोल्डर के अंदर ये क्लास है उस फोल्डर के अंदर अगर दूसरा कोई क्लास है तो वो एक्सेस कर सकता है. आउटसाइड फोल्डर नो वन कैन एक्सेस, राइट? पैकेज को हम सिंपली एज अ फोल्डर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फॉर द नाउ. तो फर्स्ट आपको विजिबिलिटी डिफाइन करनी है कि आपका वेरिएबल कितने पार्ट में एक्सेस होगा. देन आपको एट्रीब्यूट का नेम देना है, राइट? नेम, सिटी, जेंडर, विच ऑल वी कॉल द एट्रीब्यूट नेम.
उसके बाद आपको देना है उसकी डेटा टाइप, राइट, कि नेम होगा तो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, और अगर एज है तो उसके लिए हम न्यूमेरिक वैल्यू आती है तो उसके लिए हम इंटीजर यूज करेंगे, राइट। तो दिस आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इनटू द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड ऑप्शनली आपको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। इनिशियल वैल्यू मतलब अगर कोई सिटी का नेम नहीं देता है तो हम डिफॉल्ट एज अहमदाबाद रख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द इनिशियल वैल्यू। अगर यूजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो वो वैल्यू कंसिडर होगी, अदरवाइज इट टेक्स दिस इनिशियल वैल्यू, राइट। So this is how we can declare the attribute. Second, how can we declare the function, right? The same, first we have to define visibility. After that, function का name होगा. Next आपको देना है parameter list. For example, student के अंदर हमें एक function बनाना है जो आपका result calculate करके देगा, right? तो उसके लिए हमें marks तो provide करने पड़ेंगे ना, right? That marks we can pass into the parameter list. और उसके बेस पे हमें वो क्या करेगा, टोटल रिटर्न करेगा, तो दैट इज कम्स इनटू द रिटर्न डेटा टाइप, राइट। So this is how we can declare the structure and the functions inside the class. So this is the again example of this is we declare one class, right, that is a person, and person class has a two object. P1 is the object name and person is the class name, right. We have to provide the value with the every attribute over here, right. UML language will independent of any programming language, मतलब ये आपको एक जनरलाइज व्यू प्रोवाइड करती है, राइट। जिस लैंग्वेज के अंदर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पर सिंटैक्स यूज करनी होती है, राइट। तो दिस इज हाउ वी डिजाइन द क्लास डायग्राम. Let's move to the next concept is the encapsulation, right? So encapsulation is what? So encapsulation simply means binding. That is known as a encapsulation. Now before oops, उसके पहले जो प्रोसीजर ओरिएंटेड थे उसके अंदर हम सारे एट्रीब्यूट्स जैसे नेम सिटी हमने कंसिडर किया, उसको एक अलग तरीके से हम एक्सेस करते थे और फंक्शन को अलग वे के अंदर एक्सेस करते थे. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कोई भी फंक्शन चेंज कर सकता था, right? So to overcome that problem we using the encapsulation, right? So using encapsulation our data will be bind with the function into the some entity so that it cannot be accessed outside the class, right? So that is known as the encapsulation. Oh, this is the definition. It combines data and method into the single unit that is known as a class. What is the advantage? So it guards, that is protect our data and method against misuse or any modification by other component. So that is what is encapsulation. तो इनकैप्सुलेशन के अंदर जनरली हम जो भी वेरिएबल्स होंगे एज अ प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे, सो नो वन कैन एक्सेस दैट. एंड जो मेथड होगी वो हम पब्लिक डिफाइन करेंगे. मेथड के अंदर हम जितने वेरिएबल का एक्सेस देंगे, जो ऑपरेशन अलाउ करेंगे, उतने ही ऑपरेशन आप वो वेरिएबल पे कर सकते हो. तो दैट इज मेथड इज. तो मेन पर्पस ऑफ द encapsulation is the data hiding capability so that external कोई भी उसको access ना कर सके, right? So this is one of the very fundamental and important concept into the object oriented. The next we move to the abstraction. So abstraction means what? Abstraction simply means that कि जितने essential feature है that will be delivered to you, right, and hide the background detail from you, that is known as abstraction, right? Let's understand with simple example. Everyone operate the ATM machine, right? Now what we know about the ATM machine, हमें क्या बताया है कि आपको कार्ड इंसर्ट करना है, उसके अंदर पिन नंबर एंटर करना है, देन आपको जो भी ऑपरेशन है वो सिलेक्ट करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट द आउटपुट. बट हाउ इट एक्चुअली वर्किंग? सपोज हम 1000 रुपीज विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके अंदर we get some 500 rupees note, we get some 200, some 100 note. तो what is the calculation, on what basis it decide कि कितने 500 की नोट देनी है, कितने 200 की देनी है, कितने 100 की देनी है, we don't know. तो that is what that is known as a abstraction. That means हमें जितनी डिटेल की रिक्वायरमेंट है, we know that detail only, right? Rest of the detail will hide from us. So that what abstraction is. So abstraction is what focused on, right, कि what object does, वो क्या कर रहा है, right, but how it does,
It doesn't matter for the us. So that is what the data abstraction is, right? So for example, it gives one more example of the television, right? Television से हमें क्या पता है कि how can we power on or power off, right? How can we change the channel, but how it's working, we are totally unaware about this. So that is the another example of the abstraction, right? In programming also, right? If you work with the C language to print any values, we use in the printf function. But how printf function will print the value into the different console? We don't aware about that. We don't know internal logic of the printf function. So that is again one more example of the abstraction, right? So many language has abstract data types as well, right? That is a structure in C and C++. That is again example of abstraction. The class in C++ and Java, that is again one more example of the abstraction is, right? तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, बैकग्राउंड डिटेल हाइड करता है, सो वी कैन फोकस ऑन व्हाट वी रिक्वायर्ड. The next we have is the messaging. Now I have one function to generate the result, right? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो फंक्शंस डिक्लेयर किया है, whenever you require that function, आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, right? बट अगर आपको उसको कॉल करना है तो कॉल करने के टाइम यू हैव टू आल्सो पास द रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट, राइट? आपको अगर 3 सब्जेक्ट्स है तो मैंने वहां पर डिफाइन किए हैं कि आपको 3 वैल्यू पास करोगे तो ही आपको उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा. तो आपको वो 3 वैल्यू कंपलसरी पास करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन कॉल माय फंक्शन. तो दैट आर्गुमेंट दैट वी आर पासिंग इज नोन एज द मैसेजिंग, राइट? तो मैसेजिंग मेनली कब इंप्लीमेंट होता है, whenever method is called, right? उसके लिए आप जो भी पैरामीटर दैट इज मैसेज पास करते हो, that we call the messaging is, right? Now example, for example display method है, right? In the class, in that we have date, time, person, डिफरेंट फंक्शन के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हैं, तो आपको ये सारे पैरामीटर कंपलसरी पास करने पड़ेंगे, राइट? Object that invoke the method determine which method is executed, as well as अपने क्लास है, क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड डिक्लेयर किए हैं, तो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसमें से कौन सी मेथड आपको कॉल करनी है. तो दैट व्हाट अबाउट मैसेजिंग इज. नेक्स्ट वन इज द पॉलीमॉर्फिज्म. So what is a polymorphism? So polymorphism means one name having multiple forms. That is the example of the polymorphism, right? Let's see, we understand with the example. Our person, right? Now how we behave into the classroom is totally different from how we behave at our home. दोनों के अंदर हमारा behavior totally different होता है. तो what we have done according to situation, हमने हमारा बिहेवियर क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज, राइट? सो पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मींस मैनी फॉर्म्स. ओके, फॉर लेट्स अनदर एग्जांपल दैट रिलेटेड विद द प्रोग्रामिंग, प्लस जो ऑपरेटर होता है, इफ यू राइट द इक्वेशन लाइक दिस 10 + 20, तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या आउटपुट जनरेट करेगा, 30. बट इफ यू राइट द इक्वेशन लाइक हेलो + वर्ल्ड, तो वो एडिशन नहीं करेगा. व्हाट इट डज इज परफॉर्म द कॉन्केटिनेशन, द आउटपुट विल बी द हेलो वर्ल्ड, राइट? तो फर्स्ट केस के अंदर उसने एडिशन किया, बट इन सेकेंड केस उसने क्या किया, कॉन्केटिनेशन किया. तो दैट व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज, राइट? पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन इंप्लीमेंट विद द टू कंसेप्ट. फर्स्ट वी हैव द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड द सेकेंड वी हैव द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट, तो आपके पास सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन है, बट एवरी फंक्शन हैव द डिफरेंट आर्गुमेंट. दैट मीन्स फंक्शन विथ सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशन करना है, राइट? बट आपको 2 नंबर का भी एडिशन करना है और 3 नंबर का भी एडिशन करना है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई डिक्लेयर द 2 फंक्शन विद द नेम एडिशन, बट फॉर फर्स्ट फंक्शन इट टेक्स 2 आर्गुमेंट ओनली, but in second case it takes the 3 argument. So this is what we call the function overloading. The second one we have is the operator overloading, right? That means the same operator. We have taken example of plus.
राइट। तो प्लस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इंटीजर के साथ वो एडिशन करेगा बट स्ट्रिंग के साथ वो कॉन्केटिनेशन करेगा, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग वी हैड। Now let's understand what is about the aggregation and composition is. So what is the definition of it? So when object of one class, that means हमने class define किया है, but वो class develop करने के लिए what we are using, it made up from object of other class, that is known as a aggregation or composition, right? Let's understand with some example. For example, हमारे पास एक class है computer नाम का, but कंप्यूटर के अंदर वी हैव द मल्टीपल पार्ट्स, वी हैव द डिस्प्ले, वी हैव द मदरबोर्ड, वी हैव द कीबोर्ड, वी हैव द माउस, राइट? तो क्या है, इन दैट केस मदरबोर्ड इज अ सेपरेट क्लास, राइट, एंड द कंप्यूटर इज अ सेपरेट क्लास, बट कंप्यूटर के अंदर क्या है, मदरबोर्ड है, तो हमने मदरबोर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर क्लास के अंदर यूज किया है, तो दैट इज व्हाट, so that is known as the hazard or part of relationship, right? तो कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लास है, वो दूसरे सारे ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाया है, तो वी कैन से मदरबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ओके? so that concept is known as aggregation or composition, right? so we have the same example over here for the computer. Another example we will study. Suppose I have one class named the name, name नाम का ही क्लास है, उसके अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. सेकेंड क्लास आई हैव इज एड्रेस, राइट? एड्रेस के अंदर आई हैव द एट्रीब्यूट लाइक उसका हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और पिन कोड नंबर. नाउ व्हाट आई हैव यूज्ड, मैंने ये नेम और एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट एज अ एट्रीब्यूट इस क्लास के अंदर यूज किए हैं, राइट? तो nm क्या है, that is object of this name class, और address है, that is object of this address class. So this relationship is basically called the aggregation or composition. Now let's understand what is the difference between now aggregation in the composition, right? So aggregation is termed as the non-inclusive relationship, right? And second term you must remember, that is the independent. Now let's understand with example. Now ये पर्सन क्लास है, राइट? पर्सन क्लास के अंदर हमने नेम भी यूज किया है और पर्सन क्लास के अंदर हमने एड्रेस भी यूज किया है, दोनों हमने यूज किया है. अभी उसने क्या किया है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओनर क्लास, मतलब अगर ओनर क्लास नहीं है तो भी उसका एग्जिस्टेंस सेम रहेगा, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड. एड्रेस क्लास है तो अगर ऑल फैमिली मेंबर विल शेयर द सेम एड्रेस, राइट? तो एड्रेस क्लास है, वो मल्टीपल पर्सन शेयर कर रहे हैं, बट नेम इज यूनिक टू फॉर मी ओनली. तो अगर मैं ये पर्सन नाम का क्लास डिलीट कर देती हूँ, राइट, तो ये नेम क्लास नाम के क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, बट एड्रेस क्लास का एग्जिस्टेंस सेम रहेगा, राइट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मतलब नॉन एक्सक्लूसिव, वो इस पे डिपेंड नहीं है, राइट? ये क्लास है या नहीं है, ये क्लास का एग्जिस्टेंस एज इट इज रहेगा, राइट? तो दिस इज एग्रीगेशन, जो जनरली हम एम्प्टी डायमंड से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? इन कॉन्ट्रास्ट कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक्सक्लूसिव और वी कैन से डिपेंडेंट रिलेशनशिप. तो अगर ये क्लास डिलीट हो गया, देन दिस क्लास विल ऑल्सो डिलीटेड, राइट? इट विल डिफाइंड विद द fill symbol, right? Fill diamond over here, that symbol we use for the composition. So this is how aggregation and composition used and difference between that two. Now in this, there is one owner class, right? That is also known as an aggregating class. The aggregating class or owner class is what? This is one terminology that may be asked. The class that contain object of another class. तो यहाँ पर पर्सन के अंदर हमारे पास दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली द पर्सन इज ओनर क्लास, राइट? द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज द पार्ट क्लास, दैट इज एग्रीगेटेड क्लास. तो द क्लास दैट कंटेन विद इन द ओनर क्लास, राइट? तो नेम का ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज हुआ है और एड्रेस का ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, दिस टू आर द एग्रीगेटेड क्लास और पार्ट क्लास. सो व्हाट इज द
Key difference between aggregation and composition. Aggregation is an independent relationship, whereas composition is the dependent relationship. Let's move further to the next concept, that is the inheritance. What is the inheritance is? So inheritance simply means reusability, right? हमारे पास ऑलरेडी कोई कोड है, उस कोड को हम रीयूज कर रहे हैं, तो दैट वी नोन एज द इनहेरिटेंस. इट्स अ काइंड ऑफ ईजर रिलेशनशिप, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पर्सन नाम का क्लास है. नाउ हमें एक स्टूडेंट नाम का या टीचर नाम का क्लास बनाना है, तो आई कैन से दैट स्टूडेंट इज अ पर्सन, यस. टीचर इज अ पर्सन, यस. तो दिस इज इनहेरिटेंस. नाउ पर्सन नाम के क्लास के साथ जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, वो सारे एट्रीब्यूट स्टूडेंट के पास भी होंगे ना, राइट? स्टूडेंट ऑल्सो हैव नेम, स्टूडेंट ऑल्सो हैव एज, स्टूडेंट ऑल्सो हैव एड्रेस, राइट? तो हमें एक सेपरेट स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट हम रीराइट करें. बेटर दैट व्हाट हम पर्सन क्लास को इनहेरिट कर देंगे. तो इन दैट केस हमें जो मिसिंग एट्रीब्यूट है, जो पर्सन क्लास से नहीं मिल रहा है, वही हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फिर से राइट करना पड़ेगा. तो दैट व्हाट इनहेरिटेंस इज. सो व्हाट इज द मेन पर्पस? इट अलाउड क्रिएट न्यू क्लास दैट इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द existing class, that is the inheritance. It provides the concept of the reusability, right? It has one superclass and one subclass. Superclass is also known as a parent class or base class, right? In our example, person is a superclass because उसकी हम properties inherit कर रहे हैं, and the subclass जो नया class बना रहे हैं जिसके अंदर superclass inherit हो रहा है, that is known as the subclass. Now, generalization is again one form of the inheritance, right? So there is another term that we use to represent the inheritance. So what is that is? So it referring relationship where one class is specialized version of the another class. For example, हमने दिया person है, person नाम के class से हम student भी inherit कर सकते हैं, टीचर भी इनहेरिट कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी इनहेरिट कर सकते हैं, देन अदर वी हैव द डिफरेंट क्लर्क्स इन आवर कंपनी, क्लर्क भी इनहेरिट कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट जनरलाइजेशन इज. तो हमने हर एक स्टूडेंट, टीचर, वो सबको कॉमनली रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल क्लास बना दिया है, राइट? तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस ओनली. नाउ लेट्स नेक्स्ट लुक एट द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वी हैड. सो first we have is a single inheritance. That means teacher, student, person class और person के अंदर से हमने student class inherit किया. So we have the single parent and single child class available. So that is known as a single inheritance. The second we have the multi-level inheritance. तो for example, person नाम का class है, person से हमने student inherit किया है और student से हमने मार्क्स या एग्जाम को इनहेरिट किया है, राइट? तो वन पेरेंट, इट्स चाइल्ड एंड इट्स ग्रैंड चाइल्ड. तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मोर देन टू बेस क्लासेस या मोर देन टू पेरेंट क्लासेस, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड क्लास हैव द मदर एंड फादर एज अ पेरेंट क्लास, right? So that is again example of multiple inheritance. For example, आपका जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए आपका एकेडमिक स्कोर भी यूज होता है, तो उसके लिए हमने मैथ्स नाम का क्लास बनाया है. और आपका स्पोर्ट्स के पॉइंट भी कैलकुलेट होता है, तो हमारे पास स्पोर्ट्स नाम का भी डिफरेंट क्लास है. तो वन इज अ मैथ्स एंड सेकेंड इज अ स्पोर्ट्स, राइट? दोनों को इनहेरिट करके हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे. तो दैट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, right? So this is what inheritance is and what are the different types of inheritance we have available. Now, lastly, we study what is the main difference between inheritance in a composition. So, inheritance class inherit from other class in order to share, reuse or extend functionality, right? एक क्लास के ऊपर से हम नया क्लास बना रहे हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस इज. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं,
class do not inherit from other part, but it composed of other class. That means हम दूसरे class का object यहाँ पर use कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी functionality inherit कर रहे हैं, right? So that is the main key difference between inheritance and composition is, right? So we will study all the important concepts we have available, which are the very much important for the future programming language as well. So thank you.